Jagadev students. Students, welcome you all in the business studies class. Students, today in the business studies class, we are starting the chapter small business. Small business, you know, student, that this is a type of investment in business, that this type of business needs low capital investments, less number of resources, and this can be started easily, and it is very important for the economic development of the country. You know, students, in India small business is facing so many problems, like problem of finance, problem of managerial skill, problem of raw material, and so on. Because small business is generally started by low capital, and especially the people, those who are poor people in India, and they are having limited capital, they can start the small business in India. Basically, small business started in rural areas of the country, backward areas of the country, but this small business is very important for the economic development of the country. So our government is also giving initiatives and also provide incentives to the setting of these small enterprises in different rural areas and backward areas of the country, and also doing very much support for the economic and social development of these small industries. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि स्मॉल बिजनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया, यू नो दैट देर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल आर लिविंग, and if we want to remove the poverty from the country, and also if we want to develop the rural areas, then first of all we have to start more and more small scale enterprises. And when large number of small scale enterprises are there, so it also help us in the economic development of the country, and also meet the goods requirement of the people of the country. So small business is very important for India, and the government is also provide incentives and government assistance to small industries and small business units. Means सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट भी, हमारी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल, लाइक द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ आर working, both are doing so much for promoting the small scale industries in India, and also provide assistance for the development of small scale industries, so that economic and social development of the country can be possible. गवर्नमेंट जो है वो बहुत तरीके से स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को डेवलपमेंट का वर्क कर रही है, एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर, पहला है हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एंड सेकेंड इज इंसेंटिव्स. Institutional support, you know that there are various institutions started by the government which are timely and helping the financial requirements of the business, and also working in the development of the rural areas. So not only these institutions, that not only government is providing the institutional support to the small scale industries, but government also provides incentives to these industries. Government जो है सिर्फ institutions ही start नहीं करी है जो कि small scale industries को help करे, but government ने कई तरह के बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. नाउ व्हाट आर द इंसेंटिव्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो सबसे पहला है, फर्स्ट इज लैंड. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द डेवलप्ड लैंड to the for starting the enterprise in the rural and backward areas to the small scale businessmen at concessional rates, and sometimes government is providing the land for them, and in the starting years there will be no rent will be charged on these land, and after some years this amount should be paid in easy installments. So government जो है small scale industries बनाने के लिए government is providing developed plot of land to the people. Next है power. Power, you know, electricity. Government is also providing electricity for small scale industries in the backward and the rural areas, and government is charging that means very concession, government is providing concessional rates electricity, that is 50% reduction will be given by the government for the electrical charges. Means government जो है पावर सप्लाई जो है इन एरियाज को, बैकवर्ड एरियाज को, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो 50% कंसेशनल रेट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है इन इंडस्ट्रीज के लिए. एंड नेक्स्ट इज वाटर. गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग वाटर supply to these small scale industries, and also there was no water tax charges will be there, water supply charges will be there, and government is providing the water supply so that more and more industries will get the benefit of that. So water supply is also given by the government from government side to the small scale industry. Tax holiday. Tax holiday, you know student, tax holiday का मतलब था tax concession.
और टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स मीन्स टैक्स में गवर्नमेंट छूट दे रही है, टैक्स कम कर दे रही है, टैक्स बिल्कुल ही माफ कर दे रही है. दैट इज गवर्नमेंट इज डूइंग गिविंग टैक्स कंसेशंस टू द स्टार्टिंग ऑफ small scale enterprises in the rural and backward areas, so that more and more small scale industries should be established to small scale to the rural areas of the country. So government जो है different tax holidays to provided to the small scale entrepreneurs. मीन्स गवर्नमेंट जो है टैक्स में छूट देती है और उनसे कोई टैक्स भी चार्ज नहीं किया जाता इफ दे आर स्टार्टिंग देयर एंटरप्राइज इन द बैकवर्ड एरियाज. ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स. सो गवर्नमेंट हैज एबॉलिश्ड ऑक्ट्राई फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई भी किसी भी तरह का ये टैक्स ऑक्ट्राई नहीं देना पड़ता है. रॉ मटेरियल, yes, government is not only providing land, water and electricity, but also government is providing raw material to the small scale industries at the concessional rates, and the subsidies is also given to the producer for purchasing the raw material at subsidized rates, and uh, these raw material is provided to the small scale enterprises at very low rates. That means minimum charges will be paid by the small scale enterprise, and government is providing quality raw material to the small scale enterprises at concessional rates. उनको बहुत ही सस्ते दामों पे raw material available कराया जाता है. Then finance, yes, finance is the biggest requirement of starting any enterprise. So government जो है finance की facility भी provide कर रही है small scale industries को. If the small scale industries are not having sufficient fund, so government is providing finance. Government is providing easy loan to the small scale entrepreneurs that should be repaid very easily, and government is charging very minimum rate of interest on these loans, and this loan should be given at concessional rate of interest also. तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए. नाउ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, government is providing different industrial estates to the area to the small scale entrepreneurs for starting the enterprises, and in this way when the government is providing so many incentives to develop the small scale industries in rural areas. इंसेंटिव मीन्स गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए बहुत कुछ कर रही है बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में, सो दैट रीजनल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट विल बी पॉसिबल. हमारे देश में कोई भी एरिया ऐसा निगलेक्टेड ना रहे, बल्कि गवर्नमेंट वांट्स दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री शुड बी डेवलप्ड. और वो डेवलप तभी होगा जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट होंगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एंड गवर्नमेंट सो दैट फॉर दैट गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है. गवर्नमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पावर सप्लाई कंसेशन में दे रही है. इवन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द फ्री सप्लाई ऑफ वाटर टू द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, एंड नो टैक्स विल बी चार्जिंग फ्रॉम दीज एंटरप्राइजेस. ऑक्ट्राई शुड बी एबॉलिश्ड. रॉ मटेरियल भी गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर रही है, एंड financial requirements is also be fulfilled by the government from starting different financial institution to these areas, like NABARD is also there, one of them, which are which are solving the problem of finance of the small scale enterprises. And then in this way, these are the different incentives that the government is providing to the small scale enterprises, so that more and more small scale enterprise should be developed in the country. So इस तरह से government जो है equally helping to develop the small scale enterprises in our country. और उसके लिए गवर्नमेंट जो है सिर्फ इंसेंटिव्स ही नहीं प्रोवाइड कर रही है, बल्कि गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आल्सो. दैट इज गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर institutions, organizations which are helping and also solving the matters of finance and other different problems of the small scale industries, so that small scale entrepreneurs doesn't feel any kind of problem, and they will be developed more easily. And also various advice should be given to these industries by the government, so that more and more small scale enterprise should be developed in our country.